Welcome to this episode of The Deep Dive. Today we're going to do something very interesting. We field investor inquiries every day in, day out, and oftentimes the questions asked are always the same. And even though there are abundant articles online and resources that Raveum provide, I wanted to take a moment to step back and talk about the high-hitting questions. What about the RBI? What about the FEMA, the SEC, the limits? Every question that ever comes to your mind about investing abroad or just generally making investments in the US, we'll talk about that just a little bit today. So to begin off, I think the biggest question that we are always asked is how does the Foreign Exchange Management Act or the FEMA, the RBI or the SEC have anything to do with Raveum? For most retail investors, these are names that they hear in blog posts and articles, but how does it relate to making your investment abroad? So let's begin with the RBI. So you must have had a lot of experience with the RBI back in India, right? And FEMA itself. Can you give us a little bit on top of those things? So let me tell you, RBI is no longer the RBI that it was, 10 years ago. Yeah. RBI is very simple, very smooth, very straightforward now. Anybody who wants to invest money abroad, RBI has made their life very, very simple. Okay. It's very straightforward. Every Indian who has a PAN card, he can easily invest up to $250,000 under liberalized remittance scheme. And he can go to the bank and invest. Let's say I want to invest $10,000. I can go down and I have a limit of $250,000 annually. I can easily invest that kind of money into any investments abroad. Yes. So that is very, very simple, very, very easy. It is not something that can be done by only people who have a lot of money or who have some connections. Nothing of that sort is required. Yeah. It's a very straightforward, go to the bank and do your investment. Yeah. Now, earlier it was considered that, RBI and FEMA and all these things were, like a big taboo in your mind ki sab log ye sab nahi sambhal sakte. Everybody cannot handle this. Earlier, FEMA was called as FERA. It was called Foreign Exchange Regulation Act. Okay. This act was originally, it came in 1973. It started from 74 onwards, but it was a very difficult act, very tough act and regulation which India had brought in. And this was later changed in 2000, and the Foreign Exchange Regulation Act was termed as Foreign Exchange Management Act. Because it is more about managing the finances than about regulating or anything. Yeah. So they changed the act and now they made it very simple. So there are rules and guidelines which are given by RBI, which are outlined over there in FEMA, how you can use your money, how you can do remittances easily abroad without any problem. Yeah. I think the really interesting thing here is that it's not like it's a restriction, it's a blueprint, right? The Reserve Bank of India allows you to make investments under the LRS, and as long as those investments comply with the FEMA, it's completely up to you how you do it. And the biggest way you do that is by investing in a registered and an approved investment vehicle like Raveum is, which is a real estate vehicle, and through local AD banks so that you're FEMA compliant. FEMA compliant basically means that whenever you're doing the foreign currency conversion, it happens at the right place and the right authorities are governing that. Right? So whenever you're doing a remittance through Kotak Mahindra Bank, for example, then that happens at an AD approved bank. Therefore, by nature, just by using the bank to make the investment, you are FEMA compliant. And the RBI, like for example, with Raveum, we go to Kotak, we show them the actual investment offering, and they verify it as a real estate approved investment vehicle. So the RBI is very happy in terms of actually giving them the right blueprint. Yeah. Like even for Raveum, we could tell our investors send the money however you want, but by keeping them compliant and offering them the blueprint that is offered in the Indian Constitution, I think it's become abundantly easier to actually consider making investments abroad. And I think the only restriction that investors really face because of the RBI, specifically when you're investing in real estate assets and alternative investments in general, is that you cannot own more than 10% of the entire offering amount. For example, let's say there's a property worth $10 million, for example, right? You as an individual resident cannot own more than 10% of that particular property. That means you can't invest more than $1 million in that particular deal. But because that $1 million is anyway above your yearly limit of $250,000, the cap is whatever is lower for any particular deal. And that's what we mandate for our investors, to keep you compliant end to end with all Indian regulations.
Now, apart from the Indian regulations, a big piece of the puzzle here is the US regulations, the SEC. The SEC, or the Before we go into SEC, I think the most important thing that Raveum has is is because they have got the Kotak Bank by your side. yeah, Because we have Kotak Bank, all the process and all the procedure with regards to RBI compliance, all that is done through Kotak. So an Indian investor has to go to the Kotak Bank, or Kotak Bank will actually come to your doorstep and actually do all the paperwork, and everything will be done as per the forms of RBI, and they will be presenting those forms to you, and they will then make the investment as directed by you in Raveum, and made it very, very, very simple. yeah. The other thing that we were talking about, of course, on the US side, what is your take on the SEC compliance? So, SEC, or the Security Exchange Commission, is the mirror body to the Security Exchange Board in India. It manages all securities that are traded in the US. So, whether there be stocks, anytime there is a property that's being fractionalized, anything that's being managed comes under the SEC. Which means the golden rule is if you have to raise money for it, it probably comes under the SEC regulations. Now, the Jobs Act in the 90s in the US allowed us to actually go ahead and raise money institutionally, do IPOs, raise money for real estate. And what we Raveum do is we comply with SEC regulations by having every property come under the regulation when actually offering it to the public. We specifically fall under Regulation S and Regulation D exemptions. That means when you're raising money from US investors, they have to be accredited. When you're raising money from Indian investors or anyone internationally, you have to have the capital come from particular channels with particular partners as well. And by partnering with Kotak Mahindra Bank and actually working with the RBI blueprint, we ensure not only your local compliance, but also your US compliance as well. That way, end to end, the entire infrastructure is in place to keep you compliant. And our KYC and AML partners with Verif actually ensure the same as well. So that's a little bit about the SEC. It's very straightforward. Again, the existence of the SEC is not to dissuade you from investing. It is to ensure that when you are investing, it happens the right way, you're protected, and you have safeguards in place, which we as Raveum, as the firm, anyways want to give that to you. So by complying with them and actually ensuring security above and beyond what they give you, we're able to happily and comfortably sit at home and explain what we're doing and how it works. That's true. Yeah. I think one really interesting thing that we touched upon earlier was the maximum limit, 250,000 US dollars. In today's rate, about 2.3 crores. I think that people don't understand is a constitutional right of every individual under the LRS. That means you have an opportunity every year to invest up to 2.3 crores globally, right? And that's capped by the Indian government because of the opportunities you have abroad, right? I think that opportunity is very abundant, isn't it? It's very open opportunity given by the RBI. Anybody who wants to invest today abroad has a limit of investing up to $250,000, which is about 2.34 crores. Yeah. And you don't have to invest the whole amount. You can invest however much you would like to invest. अगर आपको 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप 10 लाख इन्वेस्ट करिए. अगर आपको 5 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप 5 लाख इन्वेस्ट करिए. आपको पूरा 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, पर आपके पास ये सुविधा है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट बगैर किसी डर के, बगैर किसी प्रॉब्लम के आप कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई आपको अलाउ करती है इतने इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो आप बेफिक्र होकर के, कोटक बैंक आपके पास आता है, आप कोटक बैंक के पास में फॉर्म्स भरिए, कोटक बैंक आपके पास से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ले लेगा और रेवियम के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा. सो इट्स अ वेरी क्लियर प्रोसेस. कोटक बैंक का टाई अप रेवियम के साथ होने से ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि उनके लिए एक कोटक बैंक के होने से उनके मन में एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ, ये एक सही कंपनी है, इन्वेस्टमेंट सही जगह पे जा रहा है, जहाँ पैसा हमारा जा रहा है हमको उसका रेंट बराबर आएगा और हर महीने आएगा, निरंतर आएगा, कभी भी बंद नहीं होगा. Yes, that's very right. I think apart from the 2 crore window, जो हम बात कर रहे थे अभी, I think the number 2 question we ask is, what happens when my money has reached the US? Ab kya? Now what happens? I think it is very important to know that you're not investing and giving the money to Raveum, right? Every property is owned by an LLC.
the LLC is signed by the inspector of the state, the secretary of the state. For example, in Texas, Jane Nelson. Yeah. They sign the LLC documentations, we incorporate an entire company for you, and your investment goes directly in that LLC itself, ensuring compliance end to end. And the structure for the LLC, everything is standard. We ensure all the compliance metrics. In fact, if you go to Raveum.com, you can check out the LLC paperwork as well, so that we are keeping everything transparently available to you at all times. कि क्या है, रेवियम आपके लिए एक जरिया है, एक ऐसा व्हीकल है जो कि आपको यूएस में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही आसान तरीका प्रदान करता है। आप उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट यूएस में बहुत आराम से कर सकते हैं, बिगर किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। आप पैसा जब रेवियम को ट्रांसफ़र करते हैं कोटक बैंक के थ्रू, पैसा रेवियम के अंदर आता है, लेकिन रेवियम से सीधा वो प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र हो जाता है। उस प्रॉपर्टी के शेयर्स आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जितने अमाउंट के आपने शेयर्स खरीदे, उतने अमाउंट का आपको निरंतर हर महीने रेंट आपके अकाउंट में, रेवियम की जिम्मेदारी है वो हर महीने डिपॉजिट करता रहता है। और पिछले कई महीनों से, कई सालों से ये होता जा रहा है। कितने ही इन्वेस्टर्स हैं जो कि खुश बैठे हैं इस बात से कि उनको किसी को फ़ोन करना नहीं पड़ता, किसी को ईमेल करना नहीं पड़ता कि भाई हमारे रेंट का क्या हुआ। ये ऑटोमेटिक अपने आप पैसा उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। One very important thing to note here is that we're not doing any tokenized gimmicks, even though it would be far easier to work with cryptocurrencies, blockchains that have no regulations and things like that. But that is not safe, not secure, and at the end of the day, not regulated. Those will go up and down. By using this LLC format, which I think you can talk a little bit more about, I think we offer our investors a safe haven, the safest route possible, because having it be safe and transparent is far more important than having it be super easy to do, even though it is very easy to do. You're right. I think, see, what it is basically when we buy a property in India, we are always afraid कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम में हुई कि नहीं हुई, तो हम लोग रजिस्टर ऑफिस पे जाते हैं, चेक करते हैं कि हमारे नाम की प्रॉपर्टी आई नहीं आई, एवरीथिंग इज, वी गो देयर टू द रजिस्टर ऑफिस एंड वी डू इट राइट इन फ्रंट ऑफ द रजिस्टर, ऑल द रजिस्ट्रेशंस एंड एवरीथिंग। क्यों ऐसा क्यों है? मन में, हमारे मन में एक डर रहता है, हमारे मन में डर रहता है कि वो प्रॉपर्टी जो मैंने आज खरीदी है या मैं जो खरीदने जा रहा हूँ वो वाकई मेरे नाम में ट्रांसफर होगी नहीं होगी। तो मैं रजिस्टर ऑफिस में जाकर के देखना चाहता हूँ कि वो मेरे नाम में ट्रांसफर हुई, क्योंकि इंडिया में प्रॉपर्टी फ्रॉड्स आर अबाउट 30%। मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर। द प्रॉपर्टी फ्रॉड ऑफ 30%, मतलब इट इज लाइक ह्यूज। Whereas America में the property frauds are about 0.01%, which is very low. There is no question of any property frauds. मतलब अब जैसे यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी मेरे को खरीदनी है तो मुझे किसी रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं जाना होता है, मैं सब ऑनलाइन बैठ करके प्रॉपर्टी परचेज कर रहा होता है। ऐसी सुविधा यहाँ पे और ऐसे सिस्टम्स इतने मजबूत बनाए हुए हैं कि अगर आदमी चाहे भी तो भी वो प्रॉपर्टी फ्रॉड नहीं कर सकता है। इंडिया में क्या होता है, लोग बाग जिनको फ्रॉड करना होता है वो एक प्रॉपर्टी 2 जनों को बेच देते हैं, 3 जनों को बेच देते हैं। ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता। और रेवियम इस चीज को इंश्योर करता है, बिकॉज रेवियम इज SEC कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज को इंश्योर करता है कि जब आपका पैसा रेवियम में आता है उसके बाद वो सीधा प्रॉपर्टी के अकाउंट में जाता है। जो प्रॉपर्टी अकाउंट जो कि रेवियम को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने खोल के दिया है, LLC जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने खोल के दी है, उस अकाउंट के अंदर सीधा ट्रांसफर होता है और फिर उस पैसे से सीधा प्रॉपर्टी परचेज करी हुई जाती है, क्योंकि उस LLC में ही वो प्रॉपर्टी है दर्ज, और उस प्रॉपर्टी को वहां पे परचेज किया जाता है आपके पैसे से, और आपने जितना पैसा प्रॉपर्टी के लिए दिया है उतने नाम का शेयर आपके नाम में दर्ज कर दिया जाता है। सो इट इज वेरी क्लियर कि आपके पैसे का कभी भी दुरुपयोग नहीं होगा। जिस चीज के लिए आपने आपका पैसा डाला है, आपका पैसा उसी जगह पे यूज होगा। आपके नाम पे उतने ही शेयर्स आ गए हैं जितने कि आपने देखा कि आपके रेवियम के वेबसाइट के ऊपर आपको दिखाया गया कि इतने शेयर्स आपको मिलेंगे, उतने ही शेयर्स आपको मिलेंगे एग्जैक्टली। ना उससे एक कम होएगा ना उससे एक ज्यादा होएगा, बिकॉज दिस इज ऑल SEC कंप्लायंट। रेवियम चाहे भी तो भी कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इतना रेगुलेशन है, इतना रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है कि कोई भी इस तरह की गलत काम नहीं करता है। सब कुछ, सबको एकदम क्लीन चलना है, सबको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है।
ताकि किसी भी इंसान को उसके पैसे जो उसने इन्वेस्ट करे हैं उसके अंदर कभी भी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। So another question we get asked very often is that what about taxation? What will my CA do? How will we manage this investment in our portfolio? Right? I think it's very important to note that every time you make the investment, you're doing it through a regulated AD bank, which is Kotak Mahindra Bank. So you get something that's called your LRS declaration certificate, your A2 form, that clearly states how much you've invested, how much TDS you have paid at that particular point. TDS is tax deducted at source, which is 20%, and you get to see your investments. Now, apart from that A2 form, which you get the moment you make the investment, at the end of every financial year, Raveum will give you your own tax form. An important thing to note here is that TDS is refunded by the government at the end of the financial year. So that 20% that you're paying is not lost money. It's not a sunken cost. It will be adjusted at the end of the year. It is one of the most common adjustments that are made by the income tax department. Number two, your tax form that we give to you at the end of the financial year will serve as the right form because it links directly to your A2 form. It shows you directly based on the A2 form that you invested on, how much capital you had made, and how much rental income that you had made. And the best part about all this is that when you're filing your taxes, you're going to file them both together. I think you can talk more about that in India. But from a US based perspective, there is something that's called the Double Taxation Treaty. And what this treaty states is that for all taxes paid in the US, you're given credit for taxes in India. That means you don't have to pay capital gain tax once in the US and once in India. No, no, no. You only pay one time. And your tax form will clearly show that for you as well. So you're not liable for more tax than what you'd pay in India, and you're given all the forms for all the compliance perspectives. You're right. Actually, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडिया और यूएस में डबल टैक्सेशन ट्रीटी है। इस डबल टैक्सेशन ट्रीटी होने की वजह से आपको दो बार टैक्स नहीं भरना पड़ता। आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है यूएस में और उसको बाद में सेल हुआ है उसका और उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो यूएस में आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा। और उसका एडवांटेज जो आपने यहाँ भरा है, रेवेन्यू विल प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारा पेपर वर्क टैक्स का रिलेटेड पॉपअप टैक्स से रिलेटेड जो पेपर वर्क है रेवेन्यू आपको प्रोवाइड करता है, वो आप अपने सीए को दीजिए। सीए वो आपके नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न के साथ में उसको संकलित कर देगा और फाइल कर देगा। तो ऑटोमेटिक जो टैक्स आपका यहाँ भरा गया है कैपिटल गेन के ऊपर, ये जबकि 3 साल बाद की बात है, 4 साल बाद की, जब वो प्रॉपर्टी बिकती है उसके बाद की बात है, तो उसको अपन साथ में फाइल कर देंगे, तो आपका टैक्स का इशू कोई आएगा ही नहीं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, लेट्स से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 20% जो टीडीएस कटता है, वो टीडीएस नेचुरली जब वो बैंक से कट रहा है टीडीएस तो आपके टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर वैसे ही वो पता चल जाता है कि आपका ये टीडीएस कटा है। और जब आप उनमें रिटर्न्स फाइल करते हैं तो आपके सीए जो है वो देख लेंगे आपका यहाँ पे टीडीएस कट गया है, तो अगर आपकी कोई इनकम भरने को आ रही है तो वैसे ही उसको एडजस्ट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा 20% आपका कट गया वो आपकी इनकम में एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आपका कुछ भरने को आ रहा है तो वो भरने को नहीं आएगा, अगर भरने को नहीं आएगा तो आपको रिफंड मिल जाएगा। सो पेपर वर्क तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज आपके सीए को बैंक के थ्रू इजी पता चलेगा, आपके इनकम टैक्स की वेबसाइट में आपके लॉगिन आईडी में जाकर के पता चल जाएगा कि ये 20% टीडीएस यहाँ कटा है, तो इसका उसको क्रेडिट देना है हमारे क्लाइंट को। और जो यूएस से आपको जो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको रेवियम प्रोवाइड कर देगी, वो आप अपने सीए को दिखा दीजिए तो आपका काम वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। I think what is very important that it is not enough to just be legal and compliant. Like you as an investor don't want the hassle of doing everything your own way. The fact that it's effortless is the most important thing for you. We are here. We have investor relations teams working day and night in India, giving you information when you need it. And when you need those tax forms, when you need more information, whatever you need, we provide to you. Before you even ask for it, the rent is put in your account. Before you needed the tax forms, put a month before you need it in your account as well. Whatever documentation you would ever need is already pre-prepared, delivered, and ready on the platform for you the day you start investing. And that's very important. You don't want to go run behind someone to get documents or run behind someone to get your rent. You want it all done for you, a turnkey solution. And that's what the platform really offers. It's not just the technology, it's the people and the way we work for it. ट्रू, आई थिंक रेवियम के होने की वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज है ये कि आपकी प्रॉपर्टी बहुत इजीली मैनेज हो जाती है।
तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पार्ट इज कम्प्लीटली टेकन केयर ऑफ बाय रेवियम। तो कोई इशू है नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी वहाँ है, उसको कौन संभाल रहा है, मेरा तो कोई बंदा है नहीं वहाँ पे जो उसको संभालेगा। वहाँ पे यहाँ पे बंदे रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम इतने मजबूत बने हुए हैं, इतने स्ट्रांग बने हुए हैं कि अगर रेवियम ने अपने डॉक्यूमेंट्स में आपसे जिम्मेदारी ली है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करने की, तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट रेवियम बहुत अच्छे तरीके से करेगा, क्योंकि ये उसका काम है, ये करेगा। ये इसमें इसमें कोई फेयर की बात नहीं है। एक मेरे को फियर हुआ करता था जब मैं इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदता था कि मैं अगर बॉम्बे में रहता हूँ, तो अगर मेरी प्रॉपर्टी जयपुर में होगी या मेरी अगर प्रॉपर्टी बड़ौदा में है, तो वहाँ पे कौन उस प्रॉपर्टी को संभालेगा। तो वहाँ पे मैं एक सिक्योरिटी गार्ड रखूँगा या चौकीदार रखूँगा, वो देखेगा कि भाई वो प्रॉपर्टी कौन संभाल रहा है। वो फियर यहाँ पे नहीं है। मैं यहाँ पे अब रहता हूँ, मेरी प्रॉपर्टीज़, मैं खुद अगर ऑस्टिन में रहता हूँ, मेरी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऑस्टिन में मेरे पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं, मेरी सब प्रॉपर्टीज ऑस्टिन के बाहर है। मैं एक बार भी उनको देखने के लिए नहीं गया हूँ। मैंने उनको वेबसाइट पे देखी, वेबसाइट पे देख करके मैंने उनको परचेज कर लिया। परचेज करके मैं आराम से शांति से बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फियर है ही नहीं, कोई फियर ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरी प्रॉपर्टी को कोई ले जाएगा या कोई उस पर कब्जा कर लेगा, ऐसा कुछ फियर ही नहीं है। तो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे एक बार यहाँ के रिकॉर्ड्स में अगर दर्ज हो गई है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो प्रॉपर्टी कोई और मालिक बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, मैं ये करता हूँ। और मैं खुद ऑस्टिन में रहता हूँ और मेरी प्रॉपर्टीज़ ऑस्टिन में एक भी नहीं है। मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑस्टिन के बाहर, कोई ह्यूस्टन में है, कोई एबलिन में है, लॉन्ग व्यू में है, जो कि यहाँ से दूर है। कोई 8 घंटा दूर है, कोई 10 घंटा दूर है, कोई 3 दिन की दूर है। इतनी दूर पे जाने का है, पर ज़रूरत ही नहीं है जाने की, क्योंकि डर ही नहीं है कोई। प्रॉपर्टी सेफ है, सिस्टम में आ गई है, दिख रहे हैं, कागजों में दिख रहा है कि इसमें मेरा नाम चढ़ा हुआ है, तो डर किस बात का। और आपके साथ तो रेवियम है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। सारा जिम्मेदारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का, प्रॉपर्टी की सेफ्टी का, प्रॉपर्टी संभालने का, आपको रेंट देने का जिम्मेदारी रेवियम ने उठा ली, तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं। When the system is built on such strong foundations, such strong pillars, legality is your strongest partner. There is no longer any fear of not being transparent. There's no need to hide things from anyone. There is no ambiguity in the market anymore. We want to show you everything as it is, all done for you. And that's what Raveum offers: the people, the platform, and the opportunity. So that's pretty much all from us this week at the deep dive. I think next week we'll cover more deals we're doing, more opportunities for you. Thank you so much for listening, and yeah, we'll see you next time. Okay, thank you.